बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। खुश रहो, आनंद रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते मुस्कुराते रहो मेरे प्यारे भाई। मैं कई दिनों से नहीं आ पाई भैया आपके लाइव में। मेरी लाइव चलती रहती है ना, इसी वजह से नहीं आ पाती हूँ। दीदी जी सादर प्रणाम दीदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। ठीक है दीदी जी। बिटिया रानी खुश रहो, आनंद रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो मेरी प्यारी बिटिया रानी। पूजा बिटिया 3 बजे नहीं आ रही हो क्या आजकल? ठीक है दीदी, ठीक 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 है दीदी, ऑन करके रख दो बस। पूजा बिटिया 3 बजे नहीं आ रही हो क्या आजकल? एक बार हाँ ना में बता दो अगर आवाज जा रही हो तो। थैंक यू बिटिया रानी। बहुत बहुत धन्यवाद। बिटिया रानी हमारी ढेर सारी इमोजी के साथ बनी हुई हैं। धन्यवाद पूजा बेटा। थैंक यू। थैंक यू रवि कश्यप भैया। लाइव में आए हो तो लाइक डन कर दो रवि भैया। लाइक डन कर दो भैया, लाइव में आए हो तो।
थैंक यू पूजा बिटिया, थैंक यू, धन्यवाद पूजा बिटिया, धन्यवाद। थैंक यू पूजा बिटिया, ढेर सारी इमोजी के साथ बनी हुई हैं, रंग बिरंगी इमोजी के साथ हमारी पूजा बिटिया बनी हुई हैं। थैंक यू बिटिया रानी। रमो दीदी धन्यवाद। रमो दीदी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। पूजा बिटिया हमारी ढेर सारी इमोजी के साथ बनी हुई हैं। पूजा बिटिया हमारी ढेर सारी इमोजी के साथ बनी हुई हैं। थैंक यू दीदी जी, रमो दीदी धन्यवाद। ठीक है दीदी, ठीक 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 दीदी, ढेर सारी लाइक मिल गई है दीदी, देख रही हूँ, सब आप ही तो कर रही हैं। थैंक यू पूजा बिटिया। दीदी हमारी ढेर सारी आईडी से सपोर्ट कर रही हैं, धन्यवाद दीदी जी, दिल से धन्यवाद दीदी। दीदी आप अपना काम कर लो, भी आप भोजन बना रही होंगी। रमो दीदी आप अभी भोजन बना रही होंगी दीदी, आप परेशान मत होइए, मुझे पता है कि आप हैं मेरे साथ, मेरे सपोर्ट में हैं। थैंक यू पूजा बिटिया, थैंक यू रमो दीदी।
थैंक यू पूजा बिटिया, थैंक यू दीदी जी, थैंक यू रमो दीदी, थैंक यू पूजा बिटिया, थैंक यू। रम्मू दीदी, थैंक यू पूजा बिटिया, थैंक यू। धन्यवाद दीदी जी। बिटिया रानी हमारी खूब ढेर सारी इमोजी के साथ बनी हुई हैं। पूजा बिटिया खाना बना ली हो कि नहीं अभी? पूजा बिटिया अभी खाना ना बना हो तो खाना बना लो। बीच बीच में अपनी प्रेजेंटी लगाती रहना, खाना बना लो बिटिया रानी। थैंक यू बिटिया रानी। बिटिया रानी खूब ढेर सारी इमोजी के साथ बनी हुई हैं। रमो दीदी भी हमारी बनी हुई हैं। धन्यवाद दीदी जी, धन्यवाद बिटिया रानी। हर हर महादेव ज्योति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक डन कर दो ज्योति। अच्छा कर दी हो क्या शायद? 9 लाइक ज्योति तुम्हारी ही है ना? राधे राधे ज्योति जी, राधे राधे ज्योति जी। हाँ हाँ 9 लाइक तुम्हारी ही है, दिख रही है। जय श्री कृष्णा ज्योति जी, जय श्री कृष्णा। राधे राधे ज्योति जी। ओम नमः शिवाय ज्योति जी। बिटिया रानी हमारी खूब ढेर सारी इमोजी के साथ बनी हुई हैं। पूजा बिटिया हमारी खूब ढेर सारी रंग बिरंगी इमोजी के साथ बनी हुई हैं। थैंक यू बिटिया रानी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद बिटिया।
थैंक यू पूजा बिटिया, थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू रमो दीदी, थैंक यू। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सारे लोग लाइव में रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है बात करने में, और जब अकेली सुनसान लाइव चलती है तो बहुत दिक्कत होती है। थैंक यू बिटिया रानी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद बिटिया। थैंक यू अंशिका बहन, बहुत बहुत धन्यवाद बहन। थैंक यू अंशिका बहन, थैंक यू रमू दीदी, थैंक यू पूजा बिटिया, थैंक यू ज्योति सिस्टर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बहनों को। बहुत बहुत धन्यवाद अजय भैया, लाइक कर दिया है मेरी प्यारी बड़ी दीदी जी। आप कैसे हो जी दीदी जी, खाना पीना हो गया आपका? नहीं भैया अभी नहीं हुआ है, अभी खाना पीना नहीं हुआ है। लाइक तो एक ही मिला है, चाहे अंशिका बहन का हो चाहे अजय भैया का हो। 9 से 10 हुआ है। कभी कभी क्या होता है, किसी किसी का लाइक शो नहीं करता, मेरे भी एक उसमें यही दिक्कत है। वो दीदी एक ज्यादा दिखता है, जितना लाइव में रहता है कमेंट करने वाले मोबाइल में एक ज्यादा दिखता है।
11 नहीं है, 10 ही है दीदी। इस सबके साथ ऐसे होता है। 10 रहेगा तो 11 दिखेगा, 11 रहेगा तो 12 दिखेगा। थैंक यू अंशिका बहन, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद अंशिका बहन। पूजा बिटिया धन्यवाद। पूजा बिटिया हमारी खूब ढेर सारी रंग बिरंगी इमोजी के साथ बनी हुई हैं। धन्यवाद पूजा बिटिया। थैंक यू दीदी जी, थैंक यू। पूजा बिटिया थैंक यू, अंशिका बहन थैंक यू, अजय भैया थैंक यू, गुड़िया सिस्टर थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गुड़िया बहन। हाँ भैया बोल तो रही हूँ, मेरी लाइव ऑन है। अच्छा 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 बहन, ठीक 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 पूजा बिटिया ठीक है। कितने बजे तक रहेगी पूजा बिटिया? 8 से 10? पूजा बिटिया 8 से 10 रहेगी? ठीक 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 है, ठीक 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 है, ठीक है भैया, ठीक है पूजा बिटिया, आप करके रख दो। थैंक यू गुड़िया बहन, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी बहन आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम हमेशा दीदी जी। और मेरे प्यारे जीजू जी कैसे हैं आप? खाना पीना हो गया? और सब कैसे है भैया? अभी जीजू जी आज अभी ड्यूटी से नहीं आए हैं, वहाँ काम कुछ ज्यादा है, ओवर टाइम चल रहा है आज, पोजीशन देना है। नवरात्रि में पोजीशन देना है ना भैया, तो आजकल रातों दिन काम चल रहा है, इसी वजह से लेट में आएंगे। बिला का पोजीशन लेना है। थैंक यू गुड़िया बहन, थैंक यू रमो दीदी, थैंक यू अजय भैया, थैंक यू पूजा बिटिया, थैंक यू अंशिका बहन, थैंक यू मेरी सभी बहनों को, भाइयों को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। ज्योति सिस्टर थैंक यू, रमो दीदी थैंक यू, पूनम दीदी आप बड़े इमोजी डालिए और गेम ओवर मत डालो, वॉच टाइम कम होता है दीदी। अरे गेम ओवर डाल दी क्या भैया? मैं बस उंगली चला रही थी भैया, ध्यान इधर था, आंख इधर की थी ना मोबाइल पर, नहीं देख पाई। गेम ओवर कर दी थी क्या?
गेम ओवर नहीं डाली थी भैया। थैंक यू गुड़िया बहन, थैंक यू वंशिका बहन, थैंक यू रमो दीदी, थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू पूजा बिटिया, थैंक यू अजय भैया, थैंक यू मेरे सभी भाई बहन को बहुत बहुत धन्यवाद। सबको धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। अंशिका बहन बोल रही हैं, अजय भैया ऐसी कोई बात नहीं है, बड़ी बहन जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता रहूंगा हमेशा। अपनी लाइट बंद करने के बाद समय नहीं मिलता है भैया, अभी मेरा खाना नहीं बना है भैया। अंशिका बहन बना लो। थैंक यू गुड़िया बहन, थैंक यू। अंशिका बहन धन्यवाद, गुड़िया बहन धन्यवाद, रमो दीदी धन्यवाद, मेरी सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अजय भैया धन्यवाद, पूजा बिटिया धन्यवाद, ज्योति सिस्टर धन्यवाद। जिसका नाम लेने को भूल गई हूँ उनसे क्षमा चाहती हूँ, उनको और ज्यादा धन्यवाद। अरे नहीं भैया, कुछ तो बोलना पड़ता है ना। भाई बहन में परायापन कहाँ से आ गया भाई। मुझे पता है, अभी तुम अभी टोकोगे। जब मैं धन्यवाद बोलती हूँ ना आपका नाम लेके, तभी मुझे पता है कि टोकोगे जरूर अभी। परायपन की बात नहीं है भैया, कुछ तो बोलना ही पड़ता है ना। ऐसे ठीक रहो भैया, हमेशा ऐसे स्वस्थ रहो, मस्त रहो। इंदु दीदी जी सादर प्रणाम दीदी जी। ठीक है दीदी। इंदु दीदी जी सादर प्रणाम। हाँ दीदी, दोनों से कर दो दीदी, एक से मिल गया है। इंदु दीदी एक से मिल गया है, दोनों से मिल गया दीदी, दोनों से। हाँ दीदी, 8:35 पर आई हैं आप। बाय बाय पूजा बिटिया, बहुत बहुत धन्यवाद बिटिया रानी।
अजय भैया बोल रहे हैं राधे राधे इंदु दीदी। भैया इंदु दीदी ऑटो क्लिकर लगाई होंगी ना, देख रही होंगी। थैंक यू दीदी जी। रमो दीदी थैंक यू। इंदु दीदी थैंक यू। पूनम बहन आप रोज हमारा वीडियो फुल वॉच कर दिया करो, मैं आपका कर दिया करूंगी बहन। ठीक है दीदी, आज मैं गई थी, मुझे सब गाने बहुत अच्छे लगे, आपका गारी गीत भी अच्छा लगा। और दीदी एक बात और बोलूं, गाना तो मुझे अच्छा ही लगा, गाना ज्यादा आप मुझे बहुत अच्छी लगी। आपकी आवाज से मैं सोच रही थी आप और ज्यादा एज की होंगी, लेकिन आप तो मतलब अपनी आवाज के हिसाब से आप बहुत छोटी बच्ची दिखी। मुझे लग रहा है कि आवाज से तो मैं आपको दीदी बोलती हूँ, लेकिन आप हो सकता है आप मुझसे छोटी हो। इंदु दीदी मेरी आवाज जा रही है? आपकी फोटो देखकर लगा दीदी कि आप तो शायद मुझसे छोटी हो। मेरी डेट ऑफ बर्थ 82 की है दीदी, अप्रैल 82। आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ है दीदी? अरे नहीं, बेकार नहीं हो गई दीदी, आप मुझे बहुत अच्छी लगी। सच में अच्छी, मैं कमेंट में उसमें भी बोली थी। अच्छा 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 दीदी। हाँ दीदी, ऐसे मेरे ससुराल में भी किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं, किसी को नहीं पता है किसकी क्या डेट ऑफ बर्थ है। मेरे यहाँ दीदी मेरे पिताजी, मेरे बाबा और मेरे पिताजी के भी, मतलब मेरे बाबा परदादा और मेरे पिताजी, मतलब पूरी टीचर फैमिली है। और सबकी डायरी लिखने की आदत है। अब पिताजी के, बाबा जी के विषय में तो नहीं बता सकती, लेकिन मेरे बाबा जी भी डायरी लिखते थे और मेरे पिताजी भी डायरी लिखते हैं। अभी भी रिटायर हो गए हैं, लेकिन लिखने की आदत है सबकी। तो इसी वजह से सबकी डेट ऑफ बर्थ सबका, मतलब अभी सबका लिखा हुआ रखा है, एक डायरी में सबका लिखा है। यहाँ तक कि अगर गांव में भी किसी को होता है तो उसको भी लिख देते हैं कि आज उनके यहाँ लड़का पैदा हुआ। दीदी अब तो बर्थडे वाला जमाना आ गया है, अब तो कोई बातें नहीं है। हाँ दीदी, पहले नहीं कोई ध्यान देता था, लेकिन मेरे यहाँ मेरे पिताजी का भी, मतलब वही टीचर फैमिली की वजह से दीदी, कि सब लोग मेरे, मतलब बाबा भी टीचर थे, पिताजी भी टीचर है, और बाबा के भी पिताजी मतलब स्वतंत्रता सेनानी से, जब से देश आजाद हुआ तब से मेरे यहाँ सब टीचर है। तो इसी वजह से सबकी लिखने वाली आदत है, तो सबका जो है मतलब सबकी लिखी हुई रखी है। बाकी मेरे ससुराल में भी किसी को नहीं पता है, किसी का की कुंडली बनवा लो। जबकि मेरी छोटी वाली ननद अभी 25 से 26 साल की है, उसका भी नहीं पता है।
और अब तो बर्थडे वाला ज़माना आ गया दीदी, अब तो छोटे-छोटे बच्चों को अपना बर्थडे याद रहता है। अब तो समय ही बदल गया देखते-देखते। हाँ दीदी, वो मेरे आने के समय कुछ ऐसे संतरा बहन से आपकी बात हो रही थी। आज एक बहन की जो पकड़ी गई बहन को 2 कमेंट हमारे पास कर रही थी, 2 कमेंट अम्बे के पास। कौन है दीदी? हाँ, उस टाइम कुछ ऐसे जब मैं आ रही थी, मेरे आने के समय संतरा से कुछ बातें हो रही थी आपकी। मैं सोची कि कमेंट करूँ कि क्या मैटर है दीदी, लेकिन फिर नहीं की। बहन आप लोग आपस में बात करिए, मेरे यहाँ पतिदेव आ गए, मैं इनको थोड़ा खाना-पीना दे दूँ, भोजन उठ करा दूँ, उसके बाद बात करती हूँ आप सबसे।
थैंक यू मंजू बहन, थैंक यू संतरा बहन, थैंक यू इंदू दीदी, थैंक यू रम्मू दीदी, थैंक यू ज्योति सिस्टर, थैंक यू। मेरी सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अजय भैया धन्यवाद। हमको लगता है अजय भैया चले गए। अंशिका बहन धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी सभी बहनों को। अब मैं ऊपर जा रही हूँ छत पर। अभी ये लोग आ गए हैं तो इसलिए बंद कर दी थी आवाज़। अब ये लोग सो जाएंगे तब मैं ऊपर से नीचे आऊंगी। इस समय मौसम बहुत ठंडा हो गया है। संतरा बहन धन्यवाद। इंदू दीदी धन्यवाद। मंजू बहन धन्यवाद। अंशिका बहन धन्यवाद। मेरी सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अंशिका बहन, धन्यवाद मंजू बहन, धन्यवाद रमो दीदी, धन्यवाद। अजय भैया बहुत बहुत धन्यवाद। अजय भैया फिर अभी टोकेंगे। इंदू दीदी मेरी प्यारी बड़ी दीदी जी, खाना पीना हो गया आपका? घर परिवार में सब कैसे हैं आप और जीजू? बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सभी भाई बहन को। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। मेरी सभी बहनों को बहुत धन्यवाद। थैंक यू मेरी सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। रमो दीदी धन्यवाद। इंदू दीदी धन्यवाद। संतरा बहन धन्यवाद। मंजू बहन धन्यवाद। अंशिका बहन धन्यवाद। ज्योति बहन धन्यवाद। मेरी सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय दीदी जी। सादर प्रणाम दीदी जी। शुभ रात्रि दीदी जी। बाय बाय रम्मू दीदी जी। बाय बाय। शुभ रात्रि दीदी जी।
अंशिका बहन धन्यवाद, मंजू बहन धन्यवाद, अंशिका बहन धन्यवाद, संतरा बहन धन्यवाद। मेरी सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद टीकाराम भैया, लाइक डन कर दो भैया। टीकाराम भैया लाइक डन कर दो। धन्यवाद भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप रोज निस्वार्थ भाव से आते हैं मेरी लाइव में, मेरा सपोर्ट करते हैं भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद भैया। आपका जितना आभार प्रकट करूं उतना ही कम है। चौबे भैया लाइक डन कर दो। मुझे बहुत खुशी हुई कि सब लोग आपको सपोर्ट करते हैं, हद से ज़्यादा खुश हूँ। हाँ भैया, हर भाई बहन एक दूसरे की खुशी में खुश रहते हैं। यही तो भाई बहन का प्रेम है कि हर भाई बहन अपने भाई बहन के एक दूसरे की खुशी में खुश रहते हैं और दुख में दुखी रहते हैं भैया। धन्यवाद अंशिका बहन, धन्यवाद। हाँ चौबे भैया, आपका लाइक मिल गया है, लाइक मिल गया भैया। ठीक ठीक अंशिका बहन, मुझे पता है कि आन हो, मुझे पता है बहन आप आन हो। धन्यवाद इंदु दीदी जी, धन्यवाद संतरा बहन, धन्यवाद मंजू बहन, धन्यवाद अजय भैया, धन्यवाद मेरे सभी भाई बहन को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संतरा बहन, धन्यवाद इंदु बहन, धन्यवाद मंजू बहन, धन्यवाद अजय भैया, धन्यवाद
ज्योति बहन धन्यवाद। मेरे सभी भाई बहन को बहुत बहुत धन्यवाद। हद पगली कहेगी, फिर से शुरू हो गई धन्यवाद के लिए। क्या करूं भैया और क्या बोलूं। कोई नया शब्द हो तो बताओ भैया। भैया कोई नया शब्द हो तो बताओ, कुछ तो बोलने पड़ेगा। इंदु दीदी धन्यवाद। संतरा बहन धन्यवाद। मंजू बहन धन्यवाद। क्या करूं भैया। कह तो रही हूँ भैया कोई नया वर्ड बताइए। कुछ तो बोलना ही पड़ेगा ना। कुछ बोलूंगी नहीं तो सब भाग जाएंगे लाइफ से। कुछ बोल ही नहीं रही हैं। भैया हमको ऑटो क्लिक लगाना आता ही नहीं। मंजू बहन एक वीडियो भी डाली है, मैं बहुत उसमें देखी भी, सीखने की कोशिश की। आधी दूर तक पहुंच गई हूँ, लेकिन जहां से लाइव में जोड़ा जाता है वो चीज मेरे समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं नहीं सीख पा रही हूँ। जन्मे हैं कृष्ण कन्हैया गोकुल में, बाजे बधैया हो। जन्मे हैं कृष्ण कन्हैया गोकुल में, बाजे बधैया हो। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया,
बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। नया शब्द है पूनम दीदी, हमेशा अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर फूलों की तरह बरसाए रहना। ठीक भैया, आपके ऊपर ईश्वर की असीम अनुकंपा बनी रहे भैया। आप हमेशा ऐसे हंसते मुस्कुराते रहें और अपने भाई बहनों का ऐसे प्यार बनाए रखें। में है कृष्ण कन्हैया गोकुल में, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। साड़ी बीचे नारी है कि नारी बीचे साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। ये दोहा भैया द्रौपदी जी के ऊपर बना है, जब उनका चीर हरण हुआ था उसी पर ये दोहा बना है। साड़ी बीचे नारी है कि नारी बीचे साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। इसमें ये किसी अलंकार का उदाहरण भी आता है, लेकिन भैया बहुत दिन पढ़ाई छोड़े हो गया, अब कुछ याद नहीं है। सारी चीजें सब भुला गई हैं। पता नहीं किस अलंकार का उदाहरण है ये, कौन सा अलंकार इसमें आता है। यमक अलंकार है क्या? एक ही शब्द बार बार आ रहा है, पता नहीं कौन सा अलंकार है, तो हमको याद नहीं है भैया। पढ़ाई वढ़ाई वाली बातें दिमाग में कुछ रही नहीं गई, अब तो सब भूलने वाली आदत हो गई है। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में, बाजे बधैया हो, जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में, बाजे बधैया हो। नंद बाबा जी गैया संकल्प, नंद बाबा जी गैया संकल्प, सोने सिंह मेड़ैया गोकुल में, बाजे बधैया हो, सोने सिंह मेड़ैया गोकुल में, बाजे बधैया हो। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में, बाजे बधैया हो। माते यशोदा सुनवा संकल्प, माते यशोदा सुनवा लौटावे, भर भर कोछ रुपैया गोकुल में, बाजे बधैया हो, भर भर कोछ रुपैया गोकुल में, बाजे बधैया हो। ठीक ठीक भैया, ले रहे हैं। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में, बाजे ले ली हूँ भैया, ले ली हूँ। बधैया हो, गोल बाल सब हरे सित नाचे, गोल बाल सब हरे सित नाचे, नंद जी लेत बलैया गोकुल में, बाजे बधैया हो, नंद जी लेत बलैया गोकुल में, बाजे बधैया हो। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में, बाजे बधैया हो, जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में,
बाजे बधैया हो, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में, बाजे बधैया हो। लल्ला जनम सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जनम सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। सोना भी दे दो मैया, चांदी भी दे दो उसकी गढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जनम सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जनम सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। सोना भी दे दो मैया, चांदी भी दे दो उसकी गढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जनम सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लल्ला जनम सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जनम सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई। सुनो मोरी गैया, अनोखे हुए लालन। सुनो मोरी गैया, सासू जो आवे चरवा चढ़ावे, सासू जो आवे चरवा चढ़ावे। वे मांगे कंगना हम जाने अंगना, वे मांगे कंगना हमें जाने अंगना। ओ सारे वाला अंगना दे डालो राजा, ओ सारे वाला अंगना दे डालो राजा, अनोखे हुए लालन। सुनो मोरे राजा, अनोखे हुए लालन। सुनो मोरे राजा। अब तो धन्यवाद भी नहीं बोल रही हूँ भैया। दी जो आवे काजल लगावे, नंदी जो आवे काजल लगावे। वे मांगे सड़िया हम जानी सरिया, वे मांगे सड़िया हम जानी सरिया। बैल वाली सरिया दे डालो
राजा बैल वाली सरिया दे डालो राजा अनोखे हुए लालने। सुनो मोरे राजा सुपर रीडर पूनम दीदी। अनोखे हुए लालने सुनो मोरे राजा अनोखे हुए लालने सुनो मोरे राजा। अच्छा ब्लू चोर बन गई। अरे मैं ब्लू चोर नहीं बनी भैया, मैं सोची मेरा भाई न चोर बने, इसी वजह से मैं ब्लू ले ली। अगर मैं ब्लू चोर न होती तो मेरा भाई ब्लू चोर हो जाता। अनोखे हुए लालने सुनो मोरे राजा अनोखे हुए लालने सुनो मोरे राजा। देवर जो आवे बैंड भजवावे देवर जी आवे बैंड भजवाए वे मांगे घड़िया हम जाने हड़िया। नमक वाली हड़िया दे डालो राजा नमक वाली हड़िया दे डालो राजा अनोखे हुए लालने। सुनो मोरे राजा अनोखे हुए लालने सुनो मोरे राजा। वे मांगे हड़िया वे मांगे घड़िया हम जाने हड़िया नमक वाली हड़िया दे डालो राजा नमक वाली हड़िया दे डालो राजा। ठीक है इसका बहन। ठीक बहन ठीक है। बाय बाय बहन बाय बाय। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि मेरी प्यारी बहन। शुभ रात्रि शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। दिल से धन्यवाद मेरी सभी बहनों को, मेरे सभी भाई बहन सबको धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। सुनो मोरी गैया अनोखे हुए लालने सुनो मोरी गैया अनोखे हुए लालने सुनो मोरी गैया अनोखे हुए धन्यवाद इंदु दीदी, धन्यवाद संतरा बहन, धन्यवाद मंजू बहन, धन्यवाद मेरी सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो मोरे गैया अनोखे हुए लालने सुनो मोरे गैया अनोखे हुए लालने सुनो मोरे गैया अनोखे हुए लालने
ठीक है, ठीक ठीक बहन, ठीक है संतरा बहन। लाइव का समय हो गया होगा ना आप सबके? मंजू बहन की भी लाइव का समय हो गया है, आपके भी लाइव का समय हो गया है। धन्यवाद इंदु दीदी, धन्यवाद मंजू बहन, धन्यवाद। हाँ बहन, हो गया, लाइक हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद बहन लाइक करने के लिए। शायरी से लाइट चालू करने जा रहे हैं। हाँ, अरे मुझे पता है, मैं तो पहले ही बोली थी बहन तुम्हारे लाइव का समय हो गया है। संतरा बहन तुम्हारे बताने के पहले मैं बोली थी तुम्हारी लाइव का समय हो गया है। आज मैं एकदम राइट टाइम, जब जब समय आगे पीछे हो जाता है तब नहीं बता पाती हूँ। मेरी लाइफ आज मैं करेक्ट 8 बजे शुरू की थी, तो इसमें टाइमिंग बराबर चल रही है। तो कभी कभी 5-10 मिनट आगे पीछे हो जाता है, तब टाइम का पता नहीं चलता। और जिस मोबाइल में चलती रहती है लाइव, उसमें तो टाइम शो नहीं करता। ऊपर नीचे करूंगी तो दिखेगा टाइम। 9:28 हो गया है, 2 ही मिनट बचा है बहन।
धन्यवाद भैया जी, धन्यवाद। धन्यवाद भैया जी। भैया जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। थैंक यू अजय भैया, लाइव में आए हो तो लाइक डन कर दो भैया, अगर अभी हो लाइव में तो। अजय भैया लाइव में हो तो लाइक डन कर दो। थैंक यू भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, लाइक में लाइक डन करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप मेरी लाइव में आए। भैया मैं प्रयागराज से हूँ, प्रयागराज सिंगवेरपुर से। आप कहाँ से हो भैया? अजय भैया आप कहाँ से हो? मैं तो प्रयागराज से हूँ, प्रयागराज सिंगवेरपुर लाल गोपालगंज से। अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश। अच्छा भैया, मैं भी यूपी इंडिया से ही हूँ, यूपी प्रयागराज से। अम्बेडकर नगर तो भैया नया बना है ना, मायावती सरकार में। ये इधर भैया अकबरपुर आजमगढ़ साइड में कहीं है ना शायद, ये कुशीनगर अम्बेडकर नगर, ये कई नगर कई जिला तो बना है शायद। ज़्यादा जानकारी नहीं है भैया। जब मैं जब हम लोग पढ़ाई करते तो उस टाइम 65 जिला था, अब तो शायद 80 से भी ज़्यादा हो गए हैं। अच्छा, जालापुर विधान सभा।
चले गए क्या भैया? अगर लाइव में हो तो कुछ कमेंट करो। आप मुझे सब्सक्राइब किए हो क्या भैया? हाँ भैया, मेरा गाना जो लोग सुनते हैं सबको अच्छा लगता है, लेकिन कोई सुनता नहीं है भैया। लेकिन जो लोग सुनते हैं वो मेरे गाने की तारीफ करते हैं। अपने अपने एरिया में, मतलब अपने ही क्षेत्र में गाए जाने वाला गाना गाती हूँ। सभी बहनों को अच्छा लगता है। ऊट पटंगे गीत नहीं डालती हूँ भैया, सब धार्मिक ही डालती हूँ। शादी विवाह में गाए जाने वाले माता जी के भजन डालती हूँ। सोहर गीत हुआ, जैसे यही सब डालती हूँ। बाकी ऊट पटंगे गीत मुझे पसंद नहीं है, जबकि लोग ऊट पटंगे वाले ज्यादा सुनते हैं, लेकिन व्यूज इसी वजह से मेरे व्यूज भी नहीं आते हैं। अच्छा अच्छा भैया। सब्सक्राइब किए हो क्या भैया? वैसे भी अगर सब्सक्राइब ना रहे, अगर एक दो बार क्लिक कर दो, अगर किसी का वीडियो देखो, किसी का गाना सुनो, तो अपने आप से नोटिफिकेशन आने लगता है। अच्छा अच्छा भैया। इधर तो हल छठी थी, वो ललही छठ थी, तो ललही छठ पे कुछ सोहर गीत डाली हूँ। कृष्ण भगवान का जन्म था तो उस पर डाली हूँ। व्यूज नहीं आते इसीलिए ज्यादा नहीं डालती हूँ भैया। मन टूट जाता है जब सोच के विचार के अपने मन से बना के कुछ गीत डालती हूँ और उस पर व्यूज नहीं आते, तो बहुत दुख होता है। कितना मेहनत करती हूँ और कोई सुनता ही नहीं। हाँ भैया, गाती रहती हूँ, डालती रहती हूँ, सोचती हूँ कि चलो ठीक है, अब ऐसे डालती रहूंगी। कर्म करो, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। कर्म करती रहूंगी तो फल कभी न कभी भगवान देंगे ही।
भाभी जी सुनती हैं तो कभी आपने सुना ही होगा भैया, एक भी मतलब पूरा चैनल आप अगर खोल के देखेंगे तो आपको एक से बढ़ के एक सब विवाह गीत भी सब अच्छे-अच्छे मिलेंगे, सोहर गीत भी, भजन भी, माता जी के भजन बहुत अच्छे डाली हूँ नवरात्र टाइम पर। जैसे जो त्योहार पड़ता है, फेस्टिवल जैसे जो आता है उसी पर आधारित गा के डाल देती हूँ। और विवाह गीत तो बहुत ऐसे हैं जो आपको इस पर यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे, यूट्यूब से अलग सारे गीत हैं। लेकिन फिर भी कोई सुनता नहीं है, पता नहीं क्यों? मेरी किस्मत में ही खोट है हमको लगता है। अच्छा भैया। अब आजकल भैया अच्छे गीत सुनने वालों की और अच्छे लोगों की कमी हो गई है। यूट्यूब को भी लोग पोर्न साइट बना कर रखे हैं। गंदे-संदे गीतों पर देखो लाइन लगी रहती है, मिलियंस में व्यू जाते हैं। अच्छे भगवान के नाम पर कोई धार्मिक गीत डालो तो उसे कोई सुनने को ही नहीं तैयार है। हाँ भैया, वही चीज़ बोल रही हूँ। 200-300 वीडियो डाली हूँ पूरे, सिर्फ़ एक गाना मैं वैसे शादी-विवाह में गाने वाला हँसी-मज़ाक वाला डाली हूँ। बाकी कोई हँसी-मज़ाक वाला गीत नहीं डाली हूँ। सिर्फ़ एक डाल दी हूँ, शादी-विवाह का टाइम था तो बस एक डाली हूँ। बाकी जितने हैं सब धार्मिक ही हैं। शौक है भैया, ये यूट्यूब वाला काम शौक में नहीं मजबूरी में करना शुरू की। मैं भैया लखनऊ में रहती हूँ, अपने लड़के को पढ़ा रही हूँ। बस एक ही कमरा है मेरे पास, अगल-बगल और भी बच्चे रहते हैं पढ़ाई करने वाले। मैं ढोल भी बजा लेती हूँ, मंजीरा भी बजा लेती हूँ भैया सब कुछ, लेकिन अगल-बगल पढ़ने वाले लड़के रहते हैं। लड़का मेरा सुबह 9 बजे, साढ़े 8 बजे तक, 8 सवा 8 तक घर से चला जाता है और शाम को 5 बजे आता है। पूरा दिन अकेले रहती हूँ। पतिदेव भी 9 बजे ड्यूटी चले जाते हैं। तो मैं टाइम पास के लिए शुरू की हूँ। शुरू की थी टाइम पास के लिए, लेकिन अब लगता है कि अब जब इतना मेहनत की हूँ तो एक बार चैनल मोनो हो जाए, लोग सुने तब तो ठीक है। नहीं तो पहले तो मैं ऐसे बस खाली टाइम पास के लिए शुरू की थी। अब यहाँ म्यूज़िक नहीं बजा सकती ना भैया, अगल-बगल बच्चे रहते हैं पढ़ने वाले। कोई आकर टोक देगा, आंटी जी आप सारा दिन पता नहीं क्या ये गाना बजाना करती रहती हैं। तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। किराए का मकान है। ये सारी चीज़ें म्यूज़िक संसाधन अपने घर में अगर होती भैया तो सब कुछ कर सकती थी। लेकिन जब घर में थी तब 2-3 देवरानी हैं हमारे,
मैं 4 लोग हूँ देवरानी जेठानी में, 3 देवरानी है, मैं हूँ, सब सब गाना गाती बजाती हैं। लेकिन तब बातचीत करने में समय निकल जाता था। यहाँ अकेले जब बोर होने लगी, ऊबने लगी, तो मैं सोची चलो यही मोबाइल वाला ही फन्ना फाँद ली। इसी वजह से म्यूजिक नहीं है भैया। और बस इसी वजह से ज़्यादा खुलकर गाती भी नहीं हूँ। जैसे चोरों की तरह आराम से गा के धीरे-धीरे गा के डाल देती हूँ। और तो गाना तो जैसे 2-4 लोग हों साथ में बैठकर गाएँ, तो ज़्यादा अच्छा से उठता है गाना। अकेले गाने में साँस भी फूलने लगती है। एज भी हो गई है, लड़का भी फार्मा कर रहा है, 22 साल का लड़के हो गया है। तब इस एज में अकेले गाना गाने में भी बहुत मेहनत पड़ती है। हमको तो ज़्यादा जब मैं शुरू की तो मुझे तो ज़्यादा मोबाइल के बारे में भी नहीं जानकारी थी। बस अपने लड़के से बोली कि भैया देखो सब लोग गा-गा कर डालती हैं, मेरा भी बना दो कैसे होता है। तब 1-2 दिन वो बता दिया बस ऐसे गा कर ऐसे डाल दो, बस वही गा के वही डाल, एडिटिंग भी करना नहीं आता मुझे, खाली गा के डाल देती हूँ। बस इसी में भैया टाइम पास हो जाता है, यहाँ अकेले नहीं तो पूरा दिन ऊब जाती। अब इसी में लगी रहती हूँ। अब तो जब से लाइव करने लगी तब से लाइव में 4-6 सखियाँ मिल गई हैं, उनसे बातें कर लेती हूँ। वो मेरी लाइव में आती हैं, मैं उनकी लाइव में जाती हूँ। इसी में दिन कट जाता है पूरा दिन। शाम को 6 बजे ये सब लोग आ जाते हैं, तो इन लोगों के साथ टाइम पास करती हूँ। जब गाँव में थी उसी टाइम अगर शुरू की होती भैया तो बहुत जल्दी से चल जाता। गुड नाइट भैया, शुभ रात्रि। थैंक यू भैया जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके बारे में तो कुछ पूछी ही नहीं भैया, मैं अपना ही सब बताती चली ही गई। और आप क्या करते हैं भैया? नौकरी, जॉब, बिज़नेस? भैया मैं अपने बारे में सब कुछ बता दी, आपके बारे में तो कुछ पूछी ही नहीं। आप क्या करते हो भैया? मैं तो बिना पूछे सब बता डाली। भैया अगर लाइव में हो तो बताओ आप क्या करते हो भैया? गुजरात में रहते हैं। अच्छा, अच्छा भैया। गुजरात में तो साड़ी की बहुत सूरत में साड़ी वाले बहुत जो है काम रहत है। अच्छा सुपरवाइज़र हैं। अच्छा, किस चीज़ में हो भैया सुपरवाइज़र? कंस्ट्रक्शन लाइन में हो क्या भैया?
अच्छा, कंस्ट्रक्शन में सुपरवाइजर हो। मेरे पति भी भैया सिविल इंजीनियर है कंस्ट्रक्शन में ही। यहाँ लखनऊ में शालीमार का नाम सुना होगा। शालीमार कंपनी में अभी तक थे, अब बीबीडी में है। लॉकडाउन के बाद से बीबीडी में आ गए, इससे पहले शालीमार में थे। LNT में है। LNT जानते हो? जानते हैं भैया, LNT कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, बता रहे हैं। लार्ज का बाहर की कंपनी है। हाँ, बता रहे हैं बाहर की कंपनी, इनको पता है LNT के बारे में, बता रहे हैं बहुत बड़ी कंपनी है। अब सिविल का वर्क करते हैं ना भैया, तो इनको सब जानकारी होगी, हमको तो कुछ जानकारी नहीं है भैया। अब उसी लाइन में है तो इसीलिए तुरंत पता चल गया, जैसे आप नाम बोले तुरंत बता रहे हैं कि हाँ पता है, बहुत बड़ी कंपनी है, बाहर की कंपनी है। LNT का फुल फॉर्म भी बता दिए। मेरे यहाँ से भी, मेरे ससुराल से कई लोग गुजरात में रहते हैं, गुजरात अंकलेश्वर में, अंकलेश्वर भरूच। अब आप वहाँ रहते हैं तो आपको पता होगा। मैं तो गुजरात कभी गई नहीं हूँ भैया, बस नाम सुनी हूँ। चलो ठीक है भैया, आप ड्यूटी किए होंगे, अब आप खाना वाना खा लिए भैया, आप सो जाइए। गुड नाइट, शुभ रात्रि भैया जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया इतना सपोर्ट करने के लिए। बहुत अच्छा लगा कि भाभी जी मेरा गाना सुनती हैं। ऐसे जब कोई बताता है भैया तो मनोबल बढ़ता है, और जब अपना व्यूज देखती हूँ इतना कम आता है तो बहुत बहुत दुख होता है।